Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I'm going to explain you about the apoptosis. Okay, so what is apoptosis we'll be going to see, and what causes the apoptosis, what are the morphology, and how can we diagnose the apoptosis, how the pathway is involved in apoptosis, and we'll be going to discuss about the significance of apoptosis. We'll be going to discuss overall all about the apoptosis in this topic. So first let me tell you apoptosis in which paper it is. Okay, it is in 104 paper. Apoptosis in 104 paper. It is in 104 paper and it is a 10th topic. Okay, topic number 10. So you can find this as a 10th topic in the 104 paper. Okay, do you know the 104 paper name? The paper name of 104 is cell biology, bioenergetics and cell biology. Okay, so we'll be going to discuss that only. This is the third unit of the 10th topic. Okay, third unit, 10th topic is apoptosis. So I'm going to tell you this. Okay, so first, what is apoptosis? The question is, what is apoptosis? Apoptosis is nothing but dropping. It is mean that dropping or falling of something, that we called it as apoptosis. Okay, if we see it by a definition, then we can say it is a type of cell death. It is a type of cell death in which it involves a series of reaction or series of steps, in which it involves a series of steps in a cell, which leads to cell death, that we called it as apoptosis. So where apoptosis is nothing but it is a cell death where the series of reactions occur and leading to the death of the cell is apoptosis. Apoptosis is only the meaning of cell death. Okay, and it was first introduced by Carey, Wheeler and Curie in 1972. So it was introduced by Wheeler Curie in 1972, and most of the studies on apoptosis is done on the organism called C. elegans organism. Okay, on the organism called C. elegans organism, or you can also say that it involves a single cell death. It involves single cell death, or also you can see it in embryo and adults. So it occurs in embryo and adults. Okay, it occurs in both embryo and adults. Okay, now if we see about the causes, what causes the apoptosis? This is all about the apoptosis definition, who introduced the apoptosis, and most of the studies done on apoptosis is on the C. elegans organism. First, let me tell you, I'm referring the book called David Nelson. Okay, and for this 103 paper, I'm going to refer the Leninger, David Nelson book, and also Molecular Biology of Albert. I'm going to refer these three books for this 104 paper. Okay, and now we'll be going to come towards the causes of apoptosis. What causes the apoptosis? There is two kind of causes which leads to an apoptosis. Is a physiological cause, physiological causes, and pathological causes. You know that what is pathological causes and what is physiological causes. If you are a biochemistry student, you must know this physiology and pathology, right? So now if we talk about the physiological causes, first thing which comes in physiological causes is removal of excessive cell during embryogenesis and development process. So when the development process is going on, you will be removing the excessive cell from that development process. We called it as a physiological causes, which because of that only, apoptosis is occurring. Okay, see, suppose if this is a box, right? Here in this box 50 members can able to come, but we introduced 70 members in it, right? So how many 20 members we need to remove it to maintain the constancy, right? So what we are doing, we are removing the excessive cell
during the process of development. So here the cells are getting developed, the cells are getting formed. So as it is getting formed, it should be removed, right? Yes, because excessive cell leads to imbalance of some cells. So due to that, 20 cells are removing, right? 20 cells are getting removed by the apoptosis process, by the cell death process. Okay, hope you understand this. So this will help in apoptosis. So apoptosis help the maintaining the constancy of the cell. So example is by how it can maintain it, by deaths of harmful self reactive lymphocytes. Okay, and also eliminations of cell after, and also elimination of cells after withdrawal of withdrawal of withdrawal of hormonal stimuli. सपोज अब हमारे पास क्या है, हार्मोनल स्टिमुलाई, सपोज एलिमिनेट करना है सेल को, तो आपके पास एक होगा कि आपको आपने एक सेल लिया जिसको टारगेट करना है एक पर्टिकुलर चीज़ पे, ठीक है। आपको बीपी पे टारगेट करना है, तो आपने एक टैबलेट दी जो कि बीपी पे टारगेट कर देगी। जैसे वो टारगेट कर देगी, उसका काम हो गया, अब फिर वो टैबलेट क्या होगी, रिमूव्ड हो जाएगी बॉडी से। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वो सेल जो होगा रिमूव्ड हो जाएगा बॉडी से। तो वही जैसा हार्मोनल स्टिमुलाइज का कंप्लीट हो जाता है, हम वो सेल को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कॉन्स्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। सेल तो आ रहा है अंदर, बट उसको रिमूव भी तो किया जा रहा है जैसा उसका स्टिमुलाई ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ की जाएगी किसमें, फिजियोलॉजिकल कॉज में, ठीक है। नाउ अगर हम पैथोलॉजिकल कॉज की बात करते हैं, तो एलिमिनेशन ऑफ सेल्स विद डीएनए डैमेज। जो सेल्स डीएनए डैमेज्ड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसको बॉडी से रिमूव करना होगा, राइट। वी हैव टू रिमूव दो सेल्स विच गेट डैमेज बाय द डीएनए। सो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ सेल्स विथ एक्सेसिव एक्यूमुलेटेड ऑफ मिसफोल्ड प्रोटीन। ऑब्वियसली जो सेल्स मिसफोल्ड प्रोटीन कर रहे हैं और एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं बॉडी में, तो उसको भी रिमूव करना होगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रेस की वजह से होता है। ईआर की स्ट्रेस की वजह से ये जो है मिसफोल्ड प्रोटीन्स हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें रिमूव करना होता है, तो हम इस कॉजेज़ को भी रिमूव कर देते हैं, राइट। सो ये पैथोलॉजिकल कॉजेज़ लीड्स टू लाइक दिस काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। ओके, तो ये थे हमारे डेफिनेशन, ये थे हमारे कॉजेस। अब हम जाएंगे मॉर्फोलॉजी के चीज़ें देखने। मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी, जो कि हम अपीयरेंस पे देख कर पहचान सकते हैं। तो पहली चीज़ जो होगी मॉर्फोलॉजी में, सेल श्रिंक हो गया। सेल श्रिंक होना मतलब सेल बर्स्ट करने के करीब आना, श्रिंक होता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो देखी जाती है अपोप्टोसिस में, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो जाता है और पेरिफेरल का एग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगी तो पेरिफेरल क्या होगी, पेरिफेरल एग्रीगेशन हो जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इंटैक्ट हो जाता है, ठीक है। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इंटैक्ट होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन क्या होती है, एब्सेंट होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, बल्ब्स में ऐसे फॉर्म्ड हो जाएगी। बल्ब्स में फॉर्म्ड हो जाएगी तो क्या होगा, विच रिजल्ट इन एपोप्टोटिक बॉडी, जो कि एपोप्टोटिक बॉडी में रिजल्ट करेगी। एपोप्टोजोम होगा, ऑलिमराइजेशन होगा, एपोप्टोजोम होगा, एंड देन फाइनली इट विल लीड्स टू अपोप्टोसिस, राइट। तो ये होगा। Now we'll be going to talk about the mechanism and regulation of apoptosis. So this is the important thing you need to understand. If you understand this, you'll be in benefit. तो अब देखो यहाँ पर 3 phases इन्वॉल्व है। इट इन्वॉल्व्स 3 phases, राइट। सो फर्स्ट इज इनिशिएशन। ऑब्वियसली हमेशा हर चीज़ में स्टार्टअप होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इनिशिएशन। एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन। स्टार्ट होगा तो फिर उसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा। फिर देन रिमूवल ऑफ डेड सेल्स। ऑब्वियसली इनिशिएशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर सेल डेड हो रहा है, तो सेल को रिमूव भी करना होगा, राइट। तो अब इसमें यहाँ पर 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व है। सारे फेज में 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व है। एक एंजाइम है कैस्पेजेस और एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियेसेस, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कैस्पेजेस एंडोन्यूक्लियेसेस के बारे से, ठीक है। व्हाट इज कैस्पेजेस? Caspases is nothing but these are the
सिस्टीन एस्पेटेट प्रोटीएस एंजाइम है, ठीक है. दिस इज एंजाइम एक्चुअली. कैस्पेजेस इज एंजाइम विच कंटेन सिस्टीन एस्पेटेट प्रोटीएस, ठीक है. सिस्टीन एस्पेटेट प्रोटीएस एंजाइम होगा. ओके, एंड इट क्लीव्स नियर द एस्पेटिक एसिड. जो एस्पेटिक एसिड की तरफ ही नीचे क्लीव करेगी. और इसमें 2 टाइप्स है. इट हैज़ 2 टाइप्स, ठीक है. फर्स्ट टाइप जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशिएटर, एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूशनर, ठीक है. सेकेंड इज एग्जीक्यूशनर. इनिशिएटर कैप्स जो होते हैं, caps 8, 9, 10 are the initiator ones, and executioner जो होते हैं caps 3, 6, 7, ठीक है. इनिशिएट ये करेंगे तो एग्जीक्यूशन ये करेंगे. एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा, ठीक है. कैस्पेजेस आर द एंजाइम्स विच आर ऑफ 2 टाइप, इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूशनर, which initiator has caps 8, 9, 10 and caps 3, 6, 7 as executioner, ठीक है. Now we'll be going to talk about endonuclease. Endonuclease means you know that breakdown of something, cleaving of something. So it helps in, endonuclease helps in DNA breakdown. You know that DNA breakdown which causes step ladder pattern, okay, which causes the step ladder pattern, right? You know that endonuclease you have been studied in the DNA, right? So it will help in DNA breakdown. So what we have studied till now, we studied about the definition, we studied about the causes which are of 2 types, physiological and pathological. Then we studied about the morphology, and then we study about the some mechanism. Mechanism involved 3 steps: initiation, execution and removal. And we studied about the 2 enzymes. Now we'll be going to see the mechanism in deep. Okay, so next is factors in apoptosis. What are the factors involved in apoptosis? The factors which are involved in apoptosis are pro-apoptotic, anti-apoptotic and regulated initiator of apoptotic. Pro-apoptotic means these are the apoptotic which will start the apoptotic process. Anti-apoptotic are the apoptosis which are against the apoptosis, okay, which will stop the apoptosis process. Regulated and initiating of apoptosis are these are the thing which will start the apoptosis process along with the pro-apoptotic, and they will find the channel in between this. Okay, so now we'll be going to see about the initiation. So see, initiation means it involves a 2 pathway. There will be a 2 pathways. Okay, so first is intrinsic pathway, or you can also call it as mitochondrial pathway. Okay, and the second is extrinsic pathway, or you can call it as death receptor mediated pathway. Okay, so death receptor mediated pathway. Here we'll be going to talk about these 2 pathways. So the first is what I am explaining is mitochondrial pathway. Okay, the first I'm going to explain is about mitochondrial pathway. So let's see the initiation, how it is going to initiate. So this is the mitochondrial pathway in which 90% of the apoptosis occurs in mitochondria only. Most of the common organelle affected by the apoptosis is mitochondria only. Okay, mitochondria only. If site C comes out of the mitochondria into cytoplasm, it results in apoptosis. Suppose this is the mitochondria. Okay, I am drawing just like this. Suppose this is the mitochondria, right? Here the site C will be present inside of the mitochondria. Okay, site C, what actually the site C is? What is site C? Site C is nothing but it helps in electron transfer. Yeah, okay, it helps in electron transport, and also it is an enzyme. Actually it is an enzyme. Okay, site C is an enzyme, okay, which helps in electron transport and also which decides the life and death of the cell.
Okay, so if the site C comes out of the mitochondria, if the site C comes out of the mitochondria, what happens? It will result in apoptosis. Okay, it is actually inside the mitochondria. If it comes out of the mitochondria, apoptosis will occur. So now let's see, in the normal cell, the condition in the normal cell is permeability of outer mitochondrial membrane is dependent on BCL family protein. So see, this is the mitochondria outer layer, this is the inner layer. Okay, so the permeability means the proteins which are going inside and outside, okay, or the enzymes going inside and outside, is we called as permeability of the mitochondria, right? So permeability of the mitochondria depends on BCL2 family. Okay, depends on the BCL2 family proteins. What is BCL2? BCL is nothing but B means B cells, lymphocytes. Okay, what this B cells will do? This will produce antibodies. So when this will produce antibodies, there will be a no leakage of site C in the normal cell. Okay, तो मेरी बात अब हिंदी में सुने कि साइट सी जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट? तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बीसीएल के थ्रू प्रोटेक्टिव है, आउटर लेयर जो है बीसीएल से प्रोटेक्टेड है। जब वो बीसीएल से प्रोटेक्टेड होता है तो साइट सी का कोई लीकेज नहीं होता, साइट सी का कोई लीकेज नहीं होता। तो अगर साइट सी का लीकेज नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया से तो अपॉप्टोसिस होगा ही नहीं। अगर साइट सी का लीकेज हो जाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ पॉइंट, आप देख सकते हैं, अगर साइट सी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ जाए तो अपॉप्टोसिस हो जाता है। साइट सी बीसीएल से अगर ये कवर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया तो साइट सी का रिमूवल होगा ही नहीं। जब वो उसका रिमूवल होगा ही नहीं तो अपॉप्टोसिस क्यों होगा? अपॉप्टोसिस नहीं होता है नॉर्मल सेल्स में, ये कंडीशन आती है। अगर हम अबनॉर्मल सेल्स में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख लो, अगर हम अबनॉर्मल सेल्स में देखेंगे, हियर यू कैन सी अब इन अबनॉर्मल सेल्स, अगर अबनॉर्मल सेल्स में देखेंगे तो डीएनए डैमेज होते हैं, या फिर रेडिएशन से वो डैमेज होते हैं सेल्स, या फिर इन्फेक्शन की वजह से वो डैमेज होते हैं। जैसे ही वो डैमेज होते हैं वो प्रो अपॉप्टोटिक इनिशिएटर को एक्टिवेट करते हैं। प्रो अपॉप्टोटिक इनिशिएटर्स क्या है? प्रो अपॉप्टोटिक इनिशिएटर है बैक्स एंड बैक, राइट? तो वो प्रो अपॉप्टोटिक इनिशिएटर्स को एक्टिवेट करेंगे। जैसे वो एक्टिवेट करते हैं ऑलिगोमराइजेशन ऑफ बैक्स एंड बैक हो, तो ऑलिगोमराइजेशन मतलब वो इकट्ठे होंगे, ठीक है? जैसे वो एक इकट्ठे होंगे, ये एक चैनल बनाएंगे, बैक्स एंड बैक का एक चैनल बनाएंगे, जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेयर है आउटर लेयर, वो अपनी परमिएबिलिटी लूज़ कर देगा, वो अपनी परमिएबिलिटी लूज़ करेगा। जैसे वो अपनी परमिएबिलिटी लूज़ करेगा फिर हो जाएगा लीकेज ऑफ साइट सी, फिर हो जाएगा लीकेज ऑफ साइट सी। जैसे लीकेज ऑफ साइट सी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में साइट सी आकर वो एपीएएफ फैक्टर 1 से बाइंड हो जाएगा। जैसा वो एपीएएफ फैक्टर 1 से बाइंड होगा, ये फॉर्म करेगा क्या? एपोप्टोजोम्स। इट विल फॉर्म द एपोप्टोजोम्स। एपोप्टोजोम्स फॉर्म करने के बाद ये कैप्स 9 यानी कि इनिशिएटर कैप्स को ऑन करेगा। जैसे वो इनिशिएटर कैप्स को ऑन करेगा या मीन्स एक्टिवेट करेगा, वो जाकर कैप्स 3, 6, 7 को एक्टिवेट करा, दैट इज़ अ एग्जीक्यूशनरी कैप्स एंड दैट विल लीड्स टू अपॉप्टोसिस। तो यही प्रोसेस होगा अब नॉर्मल सेल्स में, ठीक है? तो ये जो हम पढ़े थे ये थी माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, ओके, इंट्रेंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे थी। अब हम देखेंगे एक्सट्रेंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, ठीक है? एक्सट्रेंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। Extrinsic mitochondrial pathway is nothing but it is a death receptor mediated pathway, right? It is a death receptor mediated pathway, यही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेथ मीडिएटर रिसेप्टर पाथवे में यहाँ पर जो है दो अब यहाँ पर आता है डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड एक्सट्रिंसिक पाथवे है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक्टिवेट होगा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर से। तो इसके पास दो रिसेप्टर है, वो है TNFR1 और एक है CD95, ठीक है, 95। तो ये है डेथ मीडिएटेड रिसेप्टर्स जो कि एक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये जो है FASL जो है वो आकर मेम्ब्रेन को बाइंड करेगा जहाँ T लिम्फोसाइट्स होंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा FASL इज़ अ प्रोएक्टिवेट और ये होगा एक्टिवेटेड और लीड्स टू अ डेथ डोमेन
और फिर वहाँ से जाएगा FADD को एक्टिवेट करेगा। FAD इज़ नथिंग बट फैस एसोसिएटेड डेड प्रोटीन होगा। फिर इसके बाद वो प्रो कैप्स 8 को एक्टिवेट करेगा, जो कि कैप्स 8 में एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, इनएक्टिवेट प्रो कैप्स होता है। फिर इसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा कैप्स 8, इनिशिएटर कैप्स हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्सिक्यूशन कैप 3, 6, 7 होगा, फिर एपोप्टोसिस हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सट्रेंसिक पाथवे भी कंप्लीट होता है। तो जब अपोप्टोसिस हो जाता है, यानी कि सेल डेथ हो गया है, तो सेल को रिमूव भी तो करना होता है बॉडी से। अगर वो सेल हमारे बॉडीज़ में हो जाता है तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी। तो रिमूवल ऑफ सेल डेड सेल्स कैसे होता है, वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स फेवरिंग फैगोसाइटोसिस आर एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन के एक्सप्रेशन के थ्रू फैगोसाइटोसिस का हो जाता है कंप्लीट प्रोसेस। किस तरह से होता है वो देखिए। नॉर्मल सेल्स में जो होता है फॉस्फेटिडाइल सीराइन जो होता है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जहाँ पर हमारा इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा, ये